हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका जो एम्स फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, एम्स पटना में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर को डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम आपका हुआ था 19 अगस्त 2023 को। ठीक है, इसके कंप्लीट पेपर के सॉल्यूशन को देखेंगे और इसके आंसर जो है इसके आंसर की के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, Dash is the type of drug distribution system in which drugs are given to the patient from the nursing station and the pharmacy supplies from the drug store। वह कौन सा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसमें जो दवाइयां हैं वो नर्सिंग स्टेशन से मरीज को दी जाती हैं और फार्मेसी दवा स्टोर से सप्लाई करती है। ठीक है, तो इसमें आपके ऑप्शन है फ्लोर स्टॉक सिस्टम, यूनिडोज सिस्टम, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शंस एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम, एंड ऑप्शन डी है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्लोर स्टोर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शंस रेफर टू विच टाइप ऑफ फूड फंक्शन। ऑप्शन ए कल्चर फंक्शन, ऑप्शन बी साइकोलॉजिकल फंक्शन, ऑप्शन डी फिजियोलॉजिकल फंक्शन। सी से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, which of the following is are true about the toxin। वन है, it is a toxin substance that has produced naturally, and second, dioxin produced as by chlorinated chemical is a toxin। टॉक्सिन के बारे में से कौन सा कथन जो है सही है, तो केवल वन, ऑप्शन ए से बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, when dose of drug are repeated in quick succession a reduction in response occur which is called as। जब कोई भी ड्रग है उसको रिपीट किया जाए, जल्दी जल्दी दी जाती है कोई भी डोज, तो उसका असर जो है कम होने लगता है, तो इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके टैकीफ्लेक्सिस, ऑप्शन बी आइडोसिनक्रेसी, ऑप्शन सी एक्वायर टॉलरेंस एंड ऑप्शन डी ड्रग रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन ए से बिल्कुल सही हो जाएगा। Tachyphylaxis, rapid decrease in drug response after repeated doses in short time। Next question, question number fifth, which of the following are characteristics of biphasic liquid dosage form। biphasic liquid dosage form की characteristics कौन सी है इनमें से। one is it contain two phases which are undissolved drug and the solvent system, and second is the need of biphasic liquid dosage form arise when the medicament are poorly soluble in the solvent medium। ये दोनों सही है। एंड थर्ड इज एलिक्सर आर द सिरप आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। तो ये गलत है, तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एलिक्सर एंड सिरप आर नॉट ए बाइफेजिक, दे आर मोनोफेजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, This type of steroid interact with androgen receptor and enhance muscle mass and male sex hormone। Option A agrosteroid, option B glucocorticoid, and option C progesterone, and option D anabolic steroid। So correct answer is option B anabolic steroid। क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शनल डिस्टिलेशन। फंक्शनल डिस्टिलेशन की जो विशेषता है इनमें से कौन सी है, तो वन इज it is used to separate mixture of liquid that have similar boiling point, and second is it is used to obtain initial oil and herbal distillate from the several aromatic herbs। तो इसमें ऑप्शंस है बोथ वन एंड सेकंड, एंड ऑप्शन बी है ओनली वन, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, which of the following are the characteristics of the pharmaceutical drug interaction। One is it is a physiochemical interaction that occur when the drug are mixed with IV infusion, causing precipitations or inactivation of active principles before it is administered, and second is these drug interaction occur when interacting drug have either additive effect or opposing effect। Correct answer is option A only one। Question number 9, which of the following disease falls under the non-communicable disease। One is diabetes, option B
कैंसर, ऑप्शन सी रोमेटिक फीवर एंड ऑप्शन डी लेप्रोसी। इन चारों में से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन सी है? तो डायबिटीज, कैंसर एंड रोमेटिक फीवर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1, 2 एंड थर्ड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, which of the given option is not an ideal property of semi-solid dosage form? Option A, non-hygroscopy. Option B, non-greasy. Option C, rough texture. And option D, non-dehydrating. ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, रफ टेक्सचर। Ideal semi-solid dosage form like ointment, cream, gel, paste should be smooth, non-irritant, non-greasy, non-hygroscopy, and non-dehydrating. Question number 11. Which of the following is not a type of capillaries? Option A, carotid. Option B, sinusoids. And option C, continuous. And option D, fenestrated. So capillaries are the smallest blood vessel where exchanges of the gases, nutrients, and there are the mainly three types of the capillaries: continuous, sinusoids, and the fenestrated. And carotid are not the capillary. They are the large artery in the neck, supply blood to the brain. And sinusoids is the type of the capillary found in the liver, spleen, and bone marrow. And continuous is a type of the capillary found in the muscles, skin, lungs, and brain. And fenestrated is a type of capillary found in the kidney, intestine, and endocrine gland. Next question. Question number 12. This is the process which involves soaking of the powdered crude drug with the menstruum in a closed vessels for enough time of the menstruum of the penetrate the cellular structure of the crude drug and the dissolve the soluble constitutions. Option A, macerations. Option B, infusion. Option C, percolations. And option D, extraction. Correct answer is option A, macerations. Next question. Question number 13. Match the following component of eye with their respective function and the mark the correct answer. Sclera, cornea, iris and retina. इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग इनको मैच करना है. Sclera is the white outer covering, provide protection. So sclera protect eyeball against mechanical damage. C. Cornea refract light more than any other part of the eyeball. A. Iris change pupil size to control. तो थर्ड का डी हो जाएगा. रेटिना contain relay neurons and the sensory neurons that passes impulses along the optic nerve to brain. रेटिना का बी हो जाएगा. तो ऑप्शन ए से बिल्कुल सही हो जाएगा. स्क्लेरा इज द white outer covering provide protection. Cornea transparent front part bend the light and help to focus. And iris is the colored part control pupil size. And retina is the innermost layer has rod and cone convert light into nerve signal. Next question. Question number 14. Which of the following are characteristics of separate state council which is provisional pharmacy council? One is 5 members of whom at least 3 shall be possessing a degree diploma in pharmacy or to be registered pharmacist nominated by the state government. And second is 4 members elected from the amongst themselves by registered pharmacist of the state. And third is 1 member elected from amongst themselves by the member of each medical council of the state. Option A only 1, option B only 3, option C 1 and 3 only, and option D 1 and 2 only. So correct answer is option C 1 and 3 only. Question number 15. Function of progesterone hormone. प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के फंक्शन कौन कौन से इनमें से? वन है मेंटेन ऑफ यूटाइन एंडोमेट्रियम, सेकंड इज स्टिमुलेशन ऑफ मेमोरी डक्ट फॉर्मेशन, एंड थर्ड इज
development and maintain of female characteristics and behavior. So only first and second only maintain the uterine endometrium and stimulation of mammary duct formation. Next question. Question number 16. Which of the following is a type of oral route used for drug administration? Option A intramuscular, option B sublingual administration, option C intramedullary and option D subcutaneous. ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन। सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जो ड्रग होती है वो जीभ के नीचे रखी जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो नाइट्रोग्लिसरिन टेबलेट फॉर द एंजाइना, ठीक है। और इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस एंड इंट्रामेडुलरली ये जो हमारे पेरेंटल रूट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. The Pharmacy Council of India elected and nominated member shall hold office for a period of how many year? ऑप्शन है 6 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर एंड 5 ईयर। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, 5 ईयर। According to the Pharmacy Act 1948, the elected and nominated member of the PCI hold office for the 5 year. After that, they can be re-elected or renominated. Okay. So next question is question number 18. Match the following and the mark the correct answer. Alcohol का आएगा इथेनॉल एंड कलरेंट का आएगा एथाक्रेडिन लैक्टेट एंड पेरोक्साइड का आएगा पैरासिटिक एसिड एंड बिगोनाइट्स इज ए क्लोरोहेक्सिडिन। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. Which of the given option is true about the uses of diuretic? One is increase the rate of urine formation by the kidney, and second is decrease the amount of sodium and increase the amount of water in urine. तो only one option ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, increase the rate of urine formation by the kidney. Next question, question number 20. Which of the drug increase the production of bronchial secretion and reduce its viscosity to facilitate to remove by the coughing? एंटीटोसिव कफ सप्रेस करते हैं, बलगम नहीं निकालते। एंटीहिस्टामिन एलर्जी के लिए होते हैं, म्यूकस प्रेशर नहीं करते। और प्रेग्नियल ड्यूमुलेसेंट गले की इरिटेशन को कम करते हैं लेकिन म्यूकस थिन नहीं करते, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21. Which of the given disease not caused by the fungi? So correct answer is option B, filariasis. Filariasis is caused by the parasitic worms, and the Dobby ringworm athleate food is a fungal infection. Next question. Question number 22. Which of the following is not included in the local application route of drug administration? इनमें से कौन सा लोकल एप्लीकेशन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल नहीं है? ऑप्शन है इंसलेशन, इनहेलेशन, इंस्टिलेशन एंड लोशन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इनहेलेशन। लोकल एप्लीकेशन में मेडिसिन जो अप्लाई करते हैं डायरेक्टली स्किन पे, आई पे, ईयर, रेक्टम, वेजाइना पे। इनहेलेशन जो है लोकल नहीं है, ठीक है, इज नॉट ए लोकल, इट इज ए सिस्टमिक रूट बिकॉज ड्रग गोज टू द लंग्स एंड द ब्लड स्ट्रीम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, inhalation. Next question. Question number 23. Meningitis are three thin membrane that protect the central nervous system. Which of the following is not one of them? मेनिंजिस तीन पतली झिल्ली होती है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, इनमें से कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन ए से बिल्कुल सही है और बाकी की तीनों जो है वो होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. Which of the following is the correct definition of bioethics? Option A, the ethical principle or code designed for a medical profession. Option B, it deals with origin of ethical principle that governs the specification of right and the wrong behavior. And option third is these are the ethical principle or codes for maintaining normal livelihood. And option D is it refers to the study of moral belief of the people. So correct answer is option C. These are ethical principles or codes for maintaining normal livelihood. Next question. Question number 25. Which of the following is not a features of the drum dryer? Option A,
This method gives rapid heat drying and the mass transfer. And option B is the product obtained is completely dried and is in the final form. And option C is loading and unloading can be done without losses. And option D is heating time is short, being only a few seconds. So correct answer is option C. Loading and unloading can be done without losses. ड्रम ड्रायर का जो यूज है वो पेस्ट को ड्राई करके पाउडर बनाने में होता है और ये रैपिड ड्राइंग देता है, हीटिंग टाइम कम होता है इसका, लेकिन लोडिंग और अनलोडिंग में हमेशा कुछ ना कुछ प्रोसेस होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन हर जगह बिल्कुल सही हो जाएगा। ड्रम ड्रायर में जो है हीट ट्रांसफर बहुत तेज होता है, बस सही है। ठीक है, प्रोडक्ट पूरी तरह से जो है सूख जाता है और फाइनल फॉर्म में मिलता है, तो सी भी बिल्कुल सही है। एंड हीटिंग टाइम इज शॉर्ट बीइंग ओनली ए फ्यू सेकंड, जो ड्राइंग का टाइम है बहुत ही कम है, सेकंड में हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी से बिल्कुल सही है, नोट पूछा है, नोट द फीचर। नेक्स्ट है नंबर 26, व्हाट इज द phases 3 of the healing in uncomplicated surgical wounds? Option A healing stage, hemostasis stage, inflammatory stage and proliferation stage। तो ऑप्शन डी से बिल्कुल सही हो जाएगा। Question number 27. Which of the following are the key principle of damage assessment survey? One is listen, second is understand, and third is look, and option D is action. So correct answer is option D. First, second, and third only. Question number 28. Which of the following are long, thin, cylindrical rod, usually 1 to 2 micrometer in diameter, found in the skeletal muscles? So correct answer is option A. Myofibrillis. Question number 29. Which of the following are the characteristics of the Bronsted-Lowry acid and bases? One is it states that an acid is proton donor and a base is a proton acceptor. And second is it apply to only aqueous solution. And third is it remove the role of solvent and allow bases like ammonia and fluoride ion to be classified as bases as long as they bond to proton. So correct answer is option B. Question number 30. Which of the recruitment tests measure the capacity and potentiality of the for learning the skill required for the job? Option A aptitude test, intelligence test, interest test, and job test. Correct answer is option A aptitude test. Aptitude tests are used to check whether a candidate has the potential to learn new skills and perform well in future. They do not test present knowledge but test learning ability and the capacity. Next question. As per the FDA, the suspected adverse drug reaction for a new drug should be documented within how many years of its entry into the market? Option A 5, 4, 3, and 1. So correct answer is option C 3. Next question. Arrange the following in the decreasing order of their bioavailability and mark the correct answer. Compressed tablet, solution, capsule, and suspension. So correct answer is option A. Solution, suspension, capsule and compressed tablet. सॉल्यूशन जो है वो ऑलरेडी डिजोल्व होता है, फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन होता है इसका और हाईएस्ट बायोअवेलेबिलिटी होती है इसकी। ठीक है, सस्पेंशन जो है पार्टिकल डिस्पर्स इन द लिक्विड एंड अब्जॉर्ब फास्टर देन द सॉलिड डोजेज फॉर्म। एंड कैप्सूल नीड डिसोल्यूशन ऑफ द सेल बिफोर अब्जॉर्प्शन स्लोअर देन द सस्पेंशन। एंड कंप्रेस टैबलेट इज द सॉलिड फॉर्म, पहले डिसइंटीग्रेशन होगा फिर उसके बाद डिसोल्यूशन होगा, स्लोवेस्ट अब्जॉर्प्शन होता है इसका सबसे कम। ठीक है, तो इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, which of the following does not fall under the definition of misbranded drug? Option 1 is
if it is a label, container, or anything accompanying the drug bear any statement, design, or device which make any false claim for the drug or is a false of or misleading in any particular. Okay, and second is it is a imitations or a substitute for the another drug or resemble another drug in a manner likely to receive a bear upon its label on container the name of another drug. तो क्या है, स्पोरिस ड्रग की डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, मिस ब्रांडेड की नहीं होगी तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी आप इसको रीड कर लेना, ये सभी जो है मिस ब्रांडेड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following component in tablet are intended to promote flow or granules or powder material by reducing the friction between the particles? Adhesive, disintegrant and glidant and diluent। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। Question number 36. Which of the following type of the drug dramatically affect the perceptions, emotion and mental process? Correct answer is option A, hallucinations। जो व्यक्ति को असली चीजें अलग तरह से दिखाई देती है, ये perceptions, मूड और थॉट प्रोसेस पर जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, which of the following is not a function of connective tissue found in the human body? Option A, it provides immunity to the body. Option B, it provides support and the protect the body and its organ. And option C, it stores energy as reserved fat. And option D, it initiative and the transmit action potential that help coordinate body activity. Correct answer is option D. It initiative and the transmit action potential that help coordinate body activity. Next question. Which of the following is not a feature of dopiclone drug acting on central nervous system? Correct answer is option C. They produce depression or CNS in drug-dependent manner. Next question. Drug manufacturer to determine if the bacterial toxins are present in vaccine and drug that might causes fever when used on human. So option A बिल्कुल सही हो जाएगा, pyrogen testing। Pyrogen test is used to check if drug or vaccine contain pyrogen. If pyrogen are present, they can cause fever. And leakage test, it is done to check its ampoules or vials are leaking. And sterility check if the product is free from the living microorganism. And clarity test ensure that the solution is free from visible particle. Next question. Which of the following is an acute form of the exudative inflammation in which enzyme produced by the white blood cell causes liquefaction of the affected tissue resulting in the formation of the pus? So correct answer is option D, spurative inflammation। Serous inflammations characterized by the clear white fluid, not pus. Like example is skin blister. And the fibrinous inflammation associated with the fibrin depositions. Ulcerative inflammation lead to ulcer formation due to tissue necrosis. Next question. Question number 41. Which of the following are the characteristics of the scheduled bank in India? One is these banks are included in the second schedule of the RBI Act 1934. Second is these banks are not always required to submit all the returns about their financial affair to the RBI. Question number 42 है, which of the following are characteristics of monosaccharide? Option A, they usually contain a 3,6 carbon atom chain with an aldehyde and the ketone group. Second है, they are highly soluble in water due to the presence of polar hydroxyl group. And third है, they are highly solubility in non-polar solvent. तो ऑप्शन सी से बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 and 2 only. Next question.
Question number 43. Which of the following is not a feature of the covalent bonding? Option A. The formation of sodium chloride from one atom of sodium and an atom of chlorine is an example. Second is more than one pair of electron may be shared by the concerned atom. And third is the process of sharing electron does not produce ion. And D is the combining atom may belong to the same element or different element. Correct answer is option A. The formation of sodium chloride from the one atom of the sodium and other atom of the chlorine is an example. Question number 44. Which of the following are incorrect about the prosthetic group? One is it is an coenzyme or metal ion that is tightly or even covalently bonded to the enzyme protein. And B is the binding of the prosthetic group with the enzyme is temporary. Correct answer is option B. Only B. Next question. Question number 45. These are the fourth generation cephalosporin used mainly in serious infection, including septicemia, respiratory tract infection, and infection acquired from the hospital. Correct answer is option A. Cefepime is a fourth generation cephalosporin with a broad spectrum of activity against both gram-positive and gram-negative bacteria. Next question. Question number 46. Which of the following correctly despite the equation of the determination of the rate of filtration? Given V is the volume of filtration, A is the filter area, W is the weight of dry cake solid, and R is the resistance of the filter medium and filter, and T is the time, and P is the total pressure drop through cake and the filter medium, and mu is the filtrate viscosity, and alpha is the average specific cake resistant. So correct answer is option B. This is a Dacry law. Next question. Question number 47. Which of the following topical antihistamine agent which has leukotriene and platelet aggregating factor antagonist activity? Correct answer is option A. Azelastine hydrochloride. Azelastine is a second generation topical antihistamine H1 blocker used in allergic and the conjunctivitis. Apart from antihistaminic action, it also blocks leukotriene and platelet activity factor and provide strong anti-allergic effect. Next question. Dash anatomy describe group of organs that function together for single purpose. Option A cytology, option B surface, option C development, and option D systemic. Correct answer is option D systemic. The skeleton in the human body makes up almost how much of a healthy body weight? Correct answer is option C 1/5. Next question. Which type of toxicology is concerned with gathering toxicological information from animal experimentation? Correct answer is option D. Descriptive toxicology. Descriptive toxicology involving testing chemical on animal to identify harmful effect and it provide data for risk assessment and safety guideline. Next question. Question number 51. The structure of the cell organization depend upon which of the following factor? One is method of distribution adopted by the firm and B is personality of the cell manager. Correct answer is option D. Both 1 and B. ये पेपर आपका एम्स फार्मासिस्ट का है। एम्स पटना का जो पेपर हुआ था 2023 में उसका पेपर रहने वाला है ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 इसके बाद आएगा। ठीक है, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट पेपर आपको कौन सा चाहिए इसका भी कमेंट करें। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। आपकी कोई भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है या कोई भी पेपर आता है तो वो आपको मिल जाता है वहीं पर, तो उसको जरूर से ज्वाइन कर ले। ठीक है, वहाँ पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं।